Welcome back to this journey where we are learning about that how we can become an entrepreneur by converting a simple idea into a business model. So we started this module, right? This complete chapter with the module of how we can find out an opportunity. Right? We need to find out a problem and then we have to solve it, and that's how we can find out an opportunity, right? And then in module 2, what we have discussed about in depth that how we can do the customer discovery and how we can validate that. And then we move to the another module. And what was our last module which we have studied about? Anybody? Yes, it is business model development. That how we can develop a successful business model. And what we have learned in that, what is business model? We have learned about types of business models. You remember B2B, B2C, freemium, marketplace, subscription. So we have learned about the types of business model. Then business model canvas, right? Major components. Which were the major components? कुछ आ रहा है दिमाग में? Customer segments. Who are your customers? Remember? Define the group, people, organizations, mass market, niche market, value propositions. Remember, right? How to create a value proposition जहाँ पे what we are offering, हमारे पास नया क्या है, innovative क्या है, performance, customization, price, convenience, everything is balanced, right? And then channels, direct sales, web sales, partner sales. Another component was customer relationships. That how to interact with your customer, पर्सनल असिस्टेंस दे रहे हैं या सेल्फ सर्विस है, ऑटोमेटेड सर्विस है, कम्युनिटीज लाइक हार्टली डेविडसन का एग्जांपल दिया था, if you remember. ओके, I'm just recapping it. आप तो कभी भी देख सकते हैं दोबारा, लेकिन एक रिकैप करना बहुत जरूरी है. देन रेवेन्यू स्ट्रीम्स, सेल्स में रेवेन्यू स्ट्रीम्स, नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन मॉडल, लिंक्डइन प्रीमियम था ना, डिज्नी लाइसेंसिंग, right? YouTube advertising. So how to create the revenue streams, and then obviously one is direct sales. शॉप पे जाइए, सामान खरीदिए, ये तो वो है ही है, right? Then key resources. Remember what the key resources? आपके physical resources क्या है, intellectual resources क्या है, physical resources, machineries, or if you require, right? And then intellectual आपके all the rights, compliances, आपका trademark and all these things, and then human resources, workforce, people, right? Financial resources obviously is required for any business. These are the another component. और क्या थे component? जल्दी जल्दी आप मेरे को याद दिलाइए. just do a quick check. Production, problem solving, platform, network maintenance, right? What you need to do, the key activities you need to do, right? And then the key partnerships, strategic alliances, joint ventures. क्या एग्जांपल दिया था उबर और स्पॉटिफाई का, और क्या एग्जांपल दिया था Apple and Nike ka. So there are strategic alliances as well, and then cost structure. Obviously, right? You have to work upon your fixed cost and variable cost, and economic of scale and cost driven versus value driven. We have discussed everything in this business model, right? We have discussed in detail revenue strategies, then how you can scaling your business. क्या थे? Automation, franchisee करना, partnerships करना, global expansion, diversification, right? Diversification like Reliance, Tata Global Expansion, Infosys, Mahindra, partnerships, वही Uber, Spotify, Apple, Nike, automation, chatbot, CRM tools, franchise जैसे McDonald's की होती है, Domino's की होती है, correct? How to scale, and then कैसे था? Differentiating from competitors for any business model. For any business model, how you can differentiate from your competitors, right? How you are solving a specific pain better than them. क्या एग्जांपल दिया था? Zomato and Food Panda. Then unique benefits or experience. Geo streaming app versus other streaming app. क्या था difference? IPL free of cost, cricket free of cost वो दिखा रहे थे. Then clear and compelling story, Mahindra and other car makers, right? And then niche and or under
सर्व्ड मार्केट लाइक शुगर एंड अदर कॉस्मेटिक ब्रांड, ये हमने डिस्कस किया था डिटेल में एग्जांपल। एंड देन ऑब्वियसली डिफरेंस ऑब्वियस एंड इजी टू अंडरस्टैंड, मेक योर डिफरेंस ऑब्वियस एंड इजी टू अंडरस्टैंड। क्या था वो? चिकन, ऑयल फ्री चिकन एज कंपेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स, राइट। एंड फिर हमने लास्ट में डिस्कस किया था कॉमन पिटफॉल्स, राइट। हमारा प्रोडक्ट है भी, हम मार्केट फिट को अवॉइड इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं, दिमाग से अवॉइड तो नहीं करते आ रहे हैं, नहीं हो जाएगा नहीं। सेगवे, सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर वी हैव डिस्कस, अंडर प्राइसिंग, डेक्कन एयरलाइंस वी हैव डिस्कस, रिजिड मॉडल। क्या था रिजिड मॉडल? कोडैक एंड नोकिया अडेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, मार्केट के साथ चल नहीं रहे हैं, छोड़ दिया, राइट। So this all we have over expansion we have learned about, we have learned about neglecting the cash flow, right? So all these things we have learned in our last module. And now if we will go ahead, then we will discuss what? We will discuss prototype and MVP development. What is MVP? Minimum viable product, प्रोटोटाइप एंड एमवीपी डेवलपमेंट, राइट। जैसे हमने डिस्कस किया था, ये पिक्चर से आपको क्या समझ में आ रहा है? चलो क्विकली आपको एक डेफिनेशन देने से पहले, एक प्रोटोटाइप है, पेन से डिजाइन बनाया, डोनट ऐसा होना चाहिए। फिर उसका एक एमवीपी बनाया, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, जो पिक्चर से डिनोट करता है, लेकिन पिक्चर की चीज को उसने थोड़ा और एफर्ट डाल के थोड़ा सा एक्चुअल यूजेस वाला प्रोडक्ट बनाया, और जब फाइनल प्रोडक्ट निकला तो एक डिलीशियस, यम्मी एंड आल्सो लुकिंग वेरी वेरी गुड फ्रेश चॉकलेटी डोनट। सो ये पिक्चर जो है वो सिंबलाइज करती है हमारे इस मॉड्यूल को इन नटशेल, दैट फ्रॉम आइडिया टू अ बिजनेस। पहले ड्राफ्ट, फिर हमने उसको प्रोटोटाइप किया, एमवीपी किया, एंड देन द फाइनल प्रोडक्ट। ये हम पढ़ेंगे आज के मॉड्यूल में।